वीडियो मैंने चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट करके ली हैं, उन्होंने ये भी भिजवाई हैं। आप ये देखें, इसराइल के मुख्तलिफ जंगलों में आग लगी हुई है। उसने बताया है कि ये उस जगह से भी आग की वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ से फ़लस्तीन पे बमबारी होती रही। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मकाफात अमल है, कुदरत का इंतकाम है या क्या? इस बारे में ज़रूर आप हमें आगाह करें। इसी तरह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में भी मेरा ये कहना है कि उसको नेचुरली तौर पे अंदर से ये दुख है कि 1000 साल जो मुसलमान हुक्मरान रहा, यहाँ पर उनकी मस्जिदें मतलब जो उन्होंने बनाई हैं, इनके मंदिर गिराकर उसकी रंजिश उसके दिल से नहीं निकल रही। ज़रूर आप रिप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। Thick smoke engulfed the area, making driving treacherous and forcing some to abandon their vehicles. In northern Israel, the situation was further complicated by regional tensions. Near Safed, the Beria forest ignited after debris from an Israeli defense system intercepting an aerial threat sparked a blaze. Adding to the chaos, rocket fire from southern Lebanon ignited brush fires in the Kiryat Shmona area. Air raid sirens blared across the north, adding another layer of anxiety to an already terrifying situation. Israeli firefighters, aided by international assistance, bravely confronted the inferno. Hundreds of firefighters, along with aircraft and specialized firefighting units, were deployed to battle the flames. The Israel Air Force provided crucial aerial support, dousing flames with water drops and conducting surveillance flights. Medical teams worked tirelessly, treating those injured by the fires. Most of the injuries were relatively minor, mainly smoke inhalation and burns. But the ferocity of the fires left many shaken. Adding to the day's tragedies, a fire erupted in a Jerusalem dormitory, injuring dozens. The blaze, believed to be caused by an electrical short circuit, ripped through the building, trapping students inside. Emergency services responded swiftly, evacuating the dormitory and rushing the injured to hospitals. Thankfully, most of the injuries were not life-threatening.